Start. Start. Yeah. Hello, everyone. Good evening. How are you? I hope you and your families are doing well. It's Saturday. First and foremost, wish you a very happy Saturday. Saturday night, I'm sure you must be enjoying today because tomorrow is Sunday. So, yes, let us begin day 10, word of the day. So, yes, as we promised that every class will bring a new word for you for so that your vocabulary can certainly be established at a good level. So yes, the word of the day is stern. I'm sure you must have heard it or read it somewhere about stern. If you haven't, so here you go. Stern. What is stern? Stern means strict, right? I'll give you a few examples. One example I have mentioned on the slide. If you see, I'll share the stern feedback with him or with her. Stern मतलब होता है something which is very strict और बहुत serious type. Stern is I will share a stern feedback. उसने कैसा किया? मैं उससे बहुत strict feedback. I will be stern to him. मैं उससे बहुत strict behave करूँगा. Stern होता है बहुत strict. उसको हम बोलते हैं stern, right? So yes, if in case you have to use it, make sure you use stern instead of using strict. Use stern. He's very stern person. बहुत strict person है वो. My teacher is very stern. My parents are very stern. So stern means very strict. The person who actually is very strict. I'll share the stern feedback. All right. So word of the day is stern. Moving ahead. Yes, moving ahead with something new. As I promised that I'll bring some different thing. So yes, it's an activity basically. If you see, you can pick any two. Now I'm giving option to every one of you, whosoever is watching this video. If you have to pick two things out of the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, there are 8 because if you see the in the middle it says pick two. So out of these 8 things, which of the two things you're gonna pick if in case you get an option to pick? First is $10,000. $10,000. Second is free rent or mortgage for 6 months. That means wherever you are staying as of now, or wherever you want to stay, maybe in any of your dream apartment, you do not have to pay rent for 6 months for anywhere wherever you want. Third is free airline tickets for 3 years. For 3 years, you may travel anywhere around the world. For 3 years, free groceries for 1 year. Whatever you want to buy, free, irrespective, whatever, chocolates, household stuff, anything. Next is a brand new luxury car that you cannot sell. Yes, there is a condition that you can certainly buy a car, maybe a BMW, Porsche, a Bugatti, any Ferrari or Lamborghini, any car, whatever you like, your dream car could be, but you cannot sell it. There's condition is that. Unlimited free medical care for 10 years. Sounds good. You do not have to pay anything. It's unlimited. Though we do have our health insurance aligned to us, we do pay for every year we pay. And if we are working in an organization, at times our organization do provide to us. But there are certain conditions to it. We do have to pay something which there are certain clauses to it because some expenses are not covered. So here they are saying unlimited free medical care for 10 years. Unlimited. Yes, free clothes at your favorite store for a lifetime. Honestly, sounds good. Whatever clothes you want to pick. So in that case, you can, if I'm wearing a shirt today, I will not wear it again in such a situation. Free dishes from your favorite restaurant for 3 years. Wherever you want to eat, whatever you want to eat, just free for 3 years. So out of these 8, what would you like to pick? I'm sure some might be thinking, some might be confused. Yeah, which one I should pick? कौन सा है? सब अच्छे लग रहे हैं, right? I would request if you can comment me that I'm gonna pick these two. Please, it's a nice activity. Please participate. Whosoever is watching this video, if you ask me, I will tell you which two I'm gonna pick. Uh, Free mortgage, no. Free airline tickets for 3 years, no. A brand new luxury car, if I can buy it but I can't sell it, there is some condition, no.
free groceries for 1 year? No. So first and foremost, I'm gonna pick $10,000 immediately, because if I have cash, I can do anything. That's one. Because out, if I pick any other, there is some condition. If I have 3 years airline ticket, I might be traveling because I know it's free. So I'm gonna pick $10,000 immediately. That's my first priority. And my second priority would be medical care. I would have picked up because I believe this is the most in, in India there are two expenses which are too high. हम अच्छा खा लेते हैं, अच्छा पहन लेते हैं, सब कर लेते हैं, but there are two major expenses due to which we are not able to do our savings. The first expense is medical expenses. Honestly, something like if you go to a chemist, just to pay, I mean, they charge hefty amount of money. So I believe medical care is very important. Like in other nations, in India also, it is not free. You know what happens in government hospitals. If we go to a government hospital, how we get treated, because a lot of population, a lot of rush. And in private hospitals, they charge double of it. And if you are, they know it, you have been insured, then double, triple, and then something you have to pay. So this is the first major expense which I believe government should do something. Second is education. Yes, education is very, very expensive in India. So these two are major expensive. Otherwise, we can certainly afford anything. So yes, unlimited free medical. I said I would have opted if I would not have been insured. And free dishes from your favorite restaurant? No, because if I have dollars, I can. So I'm gonna pick free clothes at your favorite store for a lifetime, because I'm fond of clothes. So yes, I'm gonna pick these two. So my two are the number one, $10,000 immediately, and the second is free clothing at your favorite store for a lifetime. Lifetime, because $10,000 there is a limit, but lifetime no limit. Whenever I want, I can buy that, blah, that, wherever I want, maybe branded, anything, whatever I like. So these are my two favorites. Please comment me. What are your two favorites? All right. Okay, moving ahead. Allow me a minute, please. Thank you. It's too hot today, actually. Yes, 5 ways to say I don't like it. We all know what is the meaning of I don't like it. I don't like it का मतलब सबको पता है. मुझे ये पसंद नहीं है. मैं ये पसंद नहीं करता. I don't like it. I don't like it. So this is a very common phrase. Very common phrase. हर कोई बोलता होगा. So आज कुछ ऐसा सीखते हैं, कुछ हट के बोलते हैं, जो कि different हो. Instead of saying I don't like it, you may choose any of these five which I have written on presentation. It could be that's not for me. I'm not into it. I dislike it. I pass. I have it enough. So you can pick any one, or maybe आप change करके भी बोल सकते हो. At times you may say that's not for me. I'm not into it. I dislike it. I pass, or I have it enough. Anything you can pick, but change your vocabulary, change your sentence framing. This is the way how you can certainly, you know, differentiate your communication skills with others. If you have to be different, pick something different. I don't like it to हर कोई बोलता है. Say something new. Moving ahead. 5 ways to say peaceful. Peaceful का मतलब होता है शांत, बिल्कुल शांत स्वभाव, very peaceful person, peaceful place. I find peace here. Up, instead of saying peaceful, हम क्या बोल सकते हैं? We can say calm, right? We may say restful. We may say quiet. We may say chill. We may say tranquil. Chill भी बहुत सारे लोग बोलते हैं. Chill, take a chill pill. Chill. Chill is an informal, basically. So others you can use. Tranquil is a new thing which you can say instead of peaceful. Tranquility मतलब होता है peacefulness, शांति. So tranquil आप बोल सकते हैं, और calm भी is a common thing. Restful is a new. Quiet is also common. Okay. So moving ahead, what's next? 5 ways to say I am tired. अगर आप बहुत थके हुए हो, आप usually यही बोलते हो I am tired today. Today I'm tired. बहुत थका हुआ. So instead of saying I am tired, which is common in phrase, say I'm whacked. New thing. I'm whacked. I'm dog tired. Dog tired का मतलब basically होता है बहुत ज़्यादा थका हुआ. But we can say dog tired.
Spent. I'm spent. That is a new thing for you to learn. मतलब थका हुआ. I'm dead tired. Dead tired is also बहुत ज़्यादा थका हुआ. I'm beat. Right. So when you are tired, you may pick any of these one. Do not say I am tired. बहुत common है, हर कोई बोलता होगा. Tired का मतलब हर किसी को पता है. Say I'm spent. I'm dog tired. If you don't want to say I'm dog because there is a word called dog, you may say I'm backed. कुछ भी बोल सकते हो आप. But instead of using that, use it. Moving ahead. 5 ways to say hurry up. Hurry up का मतलब सबको पता है, जल्दी करो जल्दी करो. अभी हम कहीं if we are going to a party, we are going to attend a seminar और कोई हमारी flight है, हम बोलते हैं ना जल्दी करो, ट्रेन मिस ना हो जाए, बस मिस ना हो जाए, कुछ मिस ना हो जाए, जल्दी हमें जाना है, हम बोलते हैं hurry up hurry up. So don't say hurry up. I'm not saying don't say, I'm saying instead of saying hurry up, say get a move on. Get a move on means get a move on, jaldi karo, move jaldi. Get crackling. Get crackling means do fast. Chop chop, it's a very new thing to say. Chop chop, do fast, chop chop. Right? If you are addressing to a group, you are a coach or a teacher और आप बच्चों को जल्दी आपको रेडी कराना है, you may say like a clap. Chop chop. Guys, chop chop means hurry up. Shake a leg. Shake a leg. टांग हिलाओ मतलब जल्दी करो. Shake a leg. Let's pick up the pace. Let's pick up the pace मतलब जल्दी करो. Let's pick up the pace. Do it fast. So you may choose any one, or you may want to use 5 of them. Happy to use. I mean, कोई भी आप use कर सकते हैं as per situation. All are fit. Moving ahead. 5 ways to say happy. I'm sure happy to it's a common word we use in our day-to-day life. In moments, at times, we say to all friends, relatives, cousins, parents, or any, in fact, or with our colleagues, partners. Happy to hum bolte hi hain. So why instead of saying happy, say something different. Cheerful. I'm cheerful. Satisfied. On cloud 9. I'm jovial. Over the moon. I'm over the moon. I'm over the moon. I'm jovial. कुछ भी आप बोल सकते हो. But make sure you use it. Right? Moving ahead. I agree. मैं आपसे सहमत हूँ. Whatever you say, I agree with that. मैं उससे सहमत करता हूँ. I agree is a common. Everyone says I agree. I feel that way too. I feel that way too का मतलब भी same है. मैं भी वही feel करता हूँ जो आप feel करते हो. Because somebody says that inflation means महंगाई बहुत बढ़ रही है दिन भर दिन. So you may say I feel that way too. मैं आपसे agree करता हूँ. गर्मी बहुत बढ़ रही है दिन भर दिन. I feel that way too. I agree with you. You are on right. You are on right. आप सही हो. मैं आपसे agree करता हूँ. You are on the right. So do I. For example, I give you another example. I like you. So do I. I love you. So do I. मैं भी करता हूँ. That just I was thinking. मैं भी वही सोच रहा था. That just I was thinking. I could not have said it any better. I couldn't have said it any better. That means जो आप बोल रहे हो उससे हटकर मैं नहीं बोल सकता. मतलब जो आपने बोला शायद मैं इससे हटके नहीं बोलता, इससे बेटर नहीं बोल पाता, इसलिए मैं आपसे एग्री करता हूँ. I agree. Cool. Okay. Moving ahead. I understand. I understand is I believe we are using in our day-to-day life. At least once in a day में हम बोलते ही होंगे. इंग्लिश में ना से हिंदी में तो बोलते ही होंगे, मैं समझता हूँ. Right. Understand. I understand. मैं समझता हूँ. Got it. Got it is an informal. We use it. हम बोलते भी हैं. Got it. Okay. I get it now. Okay. I get it now. मैंने अब समझ गया हूँ. That's clear. Or that is clear. समझ आ गया है. I take your point means whatever you say, I take it. That makes sense. So make sense is a formal one we use in our organizations also. For example, आप कोई एक speech दे रहे हो अपने office में and you are saying, guys, this time our revenue is going down, our sales is going down, we need to do something, and I have a plan. Let's do this. Let's do this. Let's do this. All right, that makes sense. Even your colleague, your employees will say, yes, sir, it makes sense. Makes sense मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, do you think that you agree with me? समझ रहे हो? So that makes sense.
Make sense? That makes sense. So it is used in organizations, very formal. So you may also use it. Okay, ये भी हम लोग बोलते हैं we when we appreciate someone or when we pat someone की बहुत अच्छा job किया आपने. Pat the back भी बोलते हैं. Pat the back मतलब back पे शाबाशी देना. Good job job. So good job means बहुत अच्छा काम है. That's incredible. बहुत बढ़िया. कोई रेस में जीता फर्स्ट आया आप बोलते हो what a incredible. That's incredible performance. Good job. कोई अपने क्लास में फर्स्ट आया, ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने टॉप किया, कोई अवार्ड लेके आया, या कोई किसी का बहुत अच्छा बिहेवियर है, किसी ने कोई अच्छा काम किया, किसी की हेल्प की, गुड जॉब की जगह आप दैट्स इनक्रेडिबल बोल सकते हो. You may also say wow. Wow is an informal. We may use with our friends also. What a brain wave. What a brain wave means also good job. Now you have got it. That means now you have got it. आपने बहुत अच्छा चीज किया. That's it exactly. जो आपने किया, that's it exactly. Good work. So these are the ways when we say good work. All right. So use all of these stuff. We are using it. I'm telling you it because of I want you should start using these things. That is the way we can certainly increase our communication skills in a better way. Happy birthday तो सब wish करते होंगे. I'm sure. I am 100% sure. हर किसी की life में हम our friends, family, colleague सबको better wish करते हैं. If anyone's birthday is tomorrow or in coming days, so that आप, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि किसी का बर्थडे आफ्टर ए मंथ 6 महीने बाद है शायद आप, बिकॉज अगर किसी का मंथ if you have any friend's birthday or maybe किसी को कोई भूल गया हो, now you must have clicked it, oh हाँ मेरे फ्रेंड का बर्थडे है कल, so आप ये यूज कर सकते हो. हैप्पी बर्थडे इज a common thing. Wishing you many more candles to blow. Many happy returns of the day. I'm sure ये तो आप लोग यूज करते ही हो. Many happier returns. I wish you a wonderful birthday. Have a fabulous birthday. So I believe out of these five, आप जो last की four phrases है वो आप use करते होंगे. So the first one would be a new, because I know that remaining four are very common. Wishing you many more candles to blow is a new thing. So use it. Wishing you many more candles to blow. Cool. Now birthday हो गया. अब चलते हैं angry. Angry is also our day-to-day. Angerness day-to-day life में बढ़ता जा रहा है. Don't you think? We all are frustrated. All are frustrated. No one is happy in this world. Because I don't know what, but no one is happy. What happens? किसी का गुस्सा हम किसी और पे निकालते हैं. If you're traveling on a road, you are in a car, हल्की सी dent लगा किसी का, गाड़ी touch हुई, you come out from your car, you start venting out in anger, जैसे उसने पता नहीं क्या कर दिया. Guys, we have insurance. Why don't we call our insurance? But we start beating that person. Similar to that, अगर हमारी गाड़ी से किसी गाड़ी को हल्की सी टच हो गई, वो बाहर निकल के आ जाएगा. Why? Why you have an insurance with you? You won't believe this only happens in India. Honestly, if you are in abroad, they don't fight, they don't abuse each other. अगर किसी की गाड़ी किसी से टच हो गई है और मैंने किसी की गाड़ी को टच कर दिया, मेरी गाड़ी को किसी ने टच कर दिया है, कुछ डेंट आ गया, कुछ आ गया, we have insurance. He will call his insurance company, I'll call my insurance company. That this has happened. Insurance companies will settle. But India में insurance company तो they have this advantage कि हमारी जरूरत ही नहीं पड़ती, लोग आपस में ही settle कर देते हैं, right? But foreign countries में ऐसा नहीं होता. They don't talk to each other. Even not about talk to, मतलब they don't abuse. अगर कुछ ऐसा होता है, they talk to each other in a friendly way. It's okay, it has happened. Now let our insurance companies deal with it. आपका जो भी compensation है, my insurance company will pay. That is why insurance is mandatory. Third party insurance means दूसरी company का third party insurance is very important in India also. It's a motor vehicle act as per 1988. It's mandatory. So, and I was telling about angerness. We all are angry. We all are angry. Just that we think कहाँ पर मेरा गुस्सा निकलेगा. Maybe if you are frustrated with your boss, then you come out at home, vent out your anger on your wife or your partner, or maybe at home you had a bad day, then you come out and you say that there's a rickshaw hawker, you're venting out anger. No, be cool, be calm. किसी का गुस्सा किसी पे नहीं निकालना. एंगरनेस निकालने के और बहुत तरीके हैं. डोंट गेट इनटू फाइट. पीस. Because if you do not have patience, you cannot succeed in your life. Patience
is very, very important. Deal things with care. How to deal with it. If you are getting angry on कुछ seconds में, no. I'll have another session especially for angerness. How to control your angerness. कई लोग बोलते हैं उल्टी गिनती शुरू करो. That's a different thing. But I'll tell you a few tips how you can control your angerness when you are very, very, in a sad mood or कुछ ऐसा हो जाता है. And there is a fact also. Let me tell you before I proceed. There is a fact also. हमें गुस्सा आता नहीं है, हम गुस्सा करते हैं. Honestly, I give an example. Let's say you are in office. आपके बॉस ने आपने बहुत अच्छा काम किया. You did very well. आपने हार्ड वर्क लगाया, ओवर टाइम किया. But ultimately, end of the month, or end of the year, your boss is not happy. He said, "What you have done? You haven't achieved a desired output. Your appraisal, performance, everything is at stake." आपको गुस्सा आ रहा है बहुत कि आपने इतना काम किया, सब किया, but your boss has just ruined it everything. But you cannot anger on your boss because अगर आपने गुस्सा किया, आपकी job will be at stake. आपकी job जा सकती है. जहां पर आपको गुस्सा करना चाहिए वहां पर गुस्सा नहीं कर रहे हो. That means you have that sixth sense कि I should not be angry on him. If I vent out my angerness, I may lose my job. You have your sixth sense कि मुझे यहाँ गुस्सा नहीं करना. भले ही वो बोल रहा है, सुन लेता हूँ. आप सुन लोगे, आप उसको कुछ नहीं कहोगे. Giving you the second scenario, you are at your home. बच्चे खेल रहे हैं. एक बच्चे से गलती से कुछ प्लेट गिर जाती है, मे बी, और या आप कुछ काम कर रहे हो, आपके लैपटॉप में कुछ हल्का सा टच हो गया या कुछ, आपने गुस्से में you went up and slapped your daughter or son in angerness, right? That is where कि आप बच्चे को मार रहे हो, nothing gonna happen. बच्चा घर छोड़ के थोड़ी चला जाएगा. ऐसा थोड़ी बच्चे को मार दिया घर मैं आगे से करने को नहीं हूँ, because you know it, right? So आप गुस्सा करते हो. जहां आपको गुस्सा आना था आपने वहां कंट्रोल कर लिया. You have that sixth sense कि I should not be doing because it's my boss. But घर पे there was nothing, but you have done it. Intentionally आपने गुस्सा किया ना, ठीक है, गलती हो गई, बच्चे से उठा के उसको मार दिया और 2-4 आपने उसको सुना भी दिया. Because that is why हमें गुस्सा आता नहीं है, हम गुस्सा करते हैं. Because अगर हमें गुस्सा आता है तो हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं. There are different places you can take example in your real life. Anywhere you feel like you are in anger, but you would have control it. क्योंकि जब आपको गुस्सा आता है आपको कंट्रोल करना आता है. लेकिन जहां आपको लगता है कि यहाँ तो मेरा एक क्या कर पाएगा, वहां आप करते हो. बहुत deep thought है इसमें, सोचना कभी. Anyways, moving ahead. Instead of saying angry, you may say upset. And you may say pissed off. Pissed off is an informal. Do not use it in your organization and somewhere wherein you see formal audience hai. Pissed off is an informal. You may use it with your friends, cousins. I'm pissed off with you. Infuriated, irritated, outrage. So these are also ways to say angry. Moving ahead. Hello. Look who it is. Long time no see. ये होता है ना. How are things? Nice to see you again. Hey there. So these are the things you may use for hello. Okay. Usually, yes, हम एक दिन में कितनी बार yes बोलते हैं? कोई भी काम होता है ऑफिस में, yes, बहुत बार. Do not say yes every time. Maybe if you are on WhatsApp, even though you are on WhatsApp, even if you are at home, कोई आपसे कुछ पूछता है, you say yes. Don't say yes. Say definitely. Of course, I would love to, for sure, exactly. These are the new things. Yes is a normal thing. Yes, definitely. Of course, I would love to, for sure, exactly. All right. Yes, now you can see there are 3 things which are written continually, continuously, constantly. If you want to have a read of it, just read for it. I'm giving you 30 seconds. I'm taking a pause here. Yes. So continually, continuously, constantly. There is a difference of thin line. I'll tell you. Continually कहाँ use होता है? Repeated action that happens over a period of time
बट विद इंटरवल्स और इंटरप्शंस. कोई चीज आप रेगुलर कर रहे हो बट विद सम ब्रेक्स, इंटरप्शंस के साथ, इंटरवल्स के साथ. आप सुबह से पढ़ रहे हो बट विद सम गैप्स. आपने खाना खाया, बीच में ब्रेक लिया, यू हैड a conversation with your family. That means continuity, continue, right? That is continuity. I continually tell my son I love him. मैं उसको, for example, I tell my son throughout कि I love him. Our database is being continually updated. हमारा जो database है where we work is being updated continually. मतलब रोज update होता है every time. We are continually reassessing the situation. Something happens and we are reassessing the situation. That is continually. Continually, I studied continually for 4 hours. 4 घंटे तक मैं regular पढ़ा, but I took some breaks also. I started my study at 8 in the morning and then I ended up at 12 in the afternoon. So 4 hours I was doing my studies. But 10:30 I had my breakfast. At 11:30 I took 5 minutes of break. So therein continually. कोई चीज आप रेगुलर कर रहे हो but with some gaps, with some breaks basically. Call of nature you attended, or you had some little, you took a breather, 5 minute का. So that is continuity. Continuously होता है without a pause or interruption. For example, this class is ongoing from the last 1 hour continuously, बिना interruption के, बिना pause के. या फिर आप कोई, if you are, you know, कोई सीरियल देख रहे हो, उसमें कोई ब्रेक नहीं आया, कोई मूवी देखने जाते हो थिएटर में, अगर कोई इंटरवल से पहले यू वर वाचिंग इट कंटिन्यूअसली. You can't work continuously for 6 hours without a break. Exactly. हम 6 घंटे तक regular just eye on laptop or mobile, we cannot. Even though we should not. Those who do not take a break after 3 to 4 hours, they must. Otherwise, it's gonna impact your health, right? Posture change होना चाहिए. You should look left. You should look right. Do not just constantly look in the laptop or computer. You work wherever you work. Blink your eyes, do some stretching, help yourself, relax yourself, drink some water, walk. You should do it, but not that you're sitting on a system for continuously 6 hours without a break. That's bad for you. If you are thinking that मुझे तो कुछ होता नहीं है, अभी नहीं, उसका result बाद में पता चलेगा. So health is wealth. He played continuously for minutes on and without appearing to take a breath. Continuously he played. Maybe he was playing cricket. Continuously kept on playing बिना break लिए. He spoke continuously for 20 minutes. It happens. It happens. We spoke continuously, not 20 minutes. I would rather say 60 minutes also people talk. Continuously phone पे लगे हुए हैं. Continuously. Right. That is, I studied continuously for 4 hours. I didn't take any break. Now last is constantly. Always or often. She has the TV on constantly. मतलब constantly she was watching it. He's constantly changing his mind. हमेशा वो change करता है या बार बार वो अपना mind change करता है. We are constantly reminded of his success. बार बार हमें उसकी success के बारे में बताया, ताना मारा जाता है. वो कहाँ था, देखो कहाँ पहुंच गया, तुम वहीं रह गए हो. वो कहाँ था, कहाँ पहुंच गया, तुम वहीं रह गए. Every time. Constantly is frequently used to mean continually. Constantly is frequently used to mean continually. मतलब constantly को बार बार continually के तौर पर यूज किया जाता है. मतलब I am chasing him constantly. सुबह शाम मैं उसको chase कर रहा हूँ. मे भी किसी ने आपसे पैसे उधार लिए, he's not giving it to you, and you're chasing him like every day. You call him, he's not answering your calls. You go to his place, he's not there. Constantly you are after him or her, but that person is not responding. So that means constantly, regularly, frequently, bar bar, but with some breaks. There's a gap in between, right? Okay, so that was continually, continuously, and constantly. Cool. Moving ahead. What is next? Yes. Did you know that one fish is called fish, and if there are more fish, we will call it fish, and if there are, okay, I tell you what is in a layman language. The plural of fish is fish. When referring to more than one species, you can use fishes. कहने का मतलब ये है, कोई एक टाइप की फिश हो, उसको हम फिश बोलते हैं. अगर 5 हैं वो, तो भी आप फिश बोलोगे.
because there are certain categories, tuna fish, and there are certain different fish category भी आता है, इनमें भी different fish होती है. So अगर वो अलग अलग कैटेगरी है, कोई कैटेगरी ए कैटेगरी बी, मतलब डिफरेंट उनके नाम होते हैं, अगर वो है तब आप बोल सकते हो फिशेस. लेकिन अगर एक ही कैटेगरी की बहुत सारी फिश हैं तो आप उसको फिश बोलोगे, फिशेस नहीं बोलोगे. आई होप इट्स अ न्यू लर्निंग फॉर यू, राइट? कूल. मूविंग अहेड. Yes. So I think this has been discussed in previously, but not in detailed. Paragraph या essay writing में शायद मैंने बताया होगा. So usually, I'm sure you would have noticed it. Either we speak, or mostly when we write long paragraphs. ऐसे लिखते हैं, paragraph लिखते हैं, और very importantly when we write emails also. Emails पे भी मैंने देखा है. हम start करते हैं firstly. आपको कोई बात कहनी है, फिर अगर आपको पैराग्राफ में आप लिखते हो, फर्स्टली लिखोगे, फिर नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करोगे, सेकंडली आई वांट टू से दिस, थर्डली आई वांट टू से दिस, फिर उसके बाद अगर आपको एंड अप करना है, यू विल से लास्टली आई वांट टू से दिस. पहले लोग चिट्ठियों में भी लिखा करते थे ऐसे, इंग्लिश में अगर कोई लिख रहे लेटर. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग फर्स्टली, वी नीड टू से टू बिगिन विद. या फिर हमने एक वर्ड सीखा था प्रीवियस क्लासेस में, इफ यू रिमेंबर, एट द आउटसेट, मतलब टू बिगिन विद. एट द आउटसेट मतलब टू स्टार्ट विद. टू स्टार्ट विद, अगर आप कोई एक ईमेल लिख रहे हैं या आप किसी को बता रहे हो कुछ, टू स्टार्ट विद, टू बिगिन विद, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन दैट दिस इज हैपनिंग ब्ला ब्ला ब्ला. आपने लाइन खत्म की, नेक्स्ट पैराग्राफ आपने स्टार्ट किया. इन एडिशन, इसके अलावा, इन एडिशन आई वांट टू टेल यू दैट दिस इज इजी, फुल स्टॉप. फर्दर मोर मतलब उसके बाद भी मैं बताना चाहूंगा कि ये ब्ला ब्ला ब्ला. लास्ट में आपको कंक्लूड करना है. इन कंक्लूजन आई वांट दैट इट शुड बी रिजॉल्व्ड. 4 बार आपने पैराग्राफ लिखा, लेकिन चारों का फॉर्मेट अलग था. It literally plays a vital role, especially when you are writing a long paragraph. बहुत 500,000 words का पैराग्राफ है, बहुत ऐसे राइटिंग है. आपको उसमें ऐसे राइटिंग में आप जब लिखते हो, यू नीड टू क्रिएट पैराग्राफ्स. फॉर एग्जांपल 1000 का है तो 200 के या 250 वर्ड्स के 4 पैराग्राफ्स आपको उसमें डालने होते हैं. तो आप ऐसे कर सकते हैं, टू बिगिन विद, उसके बाद आप डाल सकते हैं इन एडिशन, फिर थर्ड पैराग्राफ्स में आप स्टार्ट कर सकते हैं फर्दर मोर टू ऐड, in conclusion to add. So this plays a vital role. Even though you speak or write, make sure do not use the ones which are in red, use the ones which are in green. Okay, moving ahead. Yes, I think we did prepositions in our initial classes. हमने कौन सी prepositions की थी? I will do some signs, I'm sure you will remember. ये की थी. जिसने पहले वाली वीडियोस देखी हैं वो लोग समझ गए होंगे. जिसने नहीं देखी, प्लीज गो एंड वॉच द वीडियोस, प्रीवियस क्लासेस जहाँ पर prepositions हुआ था. सो वी डिड ऑन, वी डिड ओवर, वी डिड अबव. कोई भी चीज अगर आपके टच हो रही है, दैट इज माई हैंड इज ऑन माई हैंड, माई हैंड इज ओवर माई हैंड इज अबव माई हैंड. सो जब दो चीजें टच होती हैं, ऑन होता है, फिर ओवर होता है, फिर अबव होता है. अबव मतलब इट इज टू हाई. सो ये 3 prepositions हमने करी थी. And we discussed that in every incoming classes also, because there are a lot of prepositions. Since है, for है, of है, inside है, beside है, बहुत सारी prepositions हैं. हम करेंगे in our upcoming classes धीरे धीरे, because एक ही क्लास में सारी prepositions नहीं करेंगे, थोड़ा सा boring हो जाएगा. So we will do 3 prepositions at least in a week, or maybe twice in a week. So last 3 थी on, above and over. If you want to know again in detail, refer to my previous videos. बहुत detail में है, on का use होता है, over का use होता है, and above का use होता है. So today I'm going to discuss between, among and amongst. ये 3 prepositions आज हम करेंगे. First is between. अब between कहाँ use होता है? Very simple and layman language में I will make you understand. Very simple. Not a bookish language, not a grammar language, not a Google language या कोई और. Because you may get confused. बहुत simple, बहुत easy तरीके से with examples. आपने अगर ये वीडियो देख के इस prepositions learn कर ली, no need to refer any book. And I'm sure अगर आपको prepositions नहीं भी आती, you do not like it. After this, you're gonna like it. So between, very simple. जब आप दो लोगों की बात करते हो, दो चीजों की, तब between होता है. For example, I'm standing between the trees. यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं दो trees, for example, this is a tree, this is a tree. My face, my face is between 2 trees. जब दो लोगों के बीच में कोई होता है, उसको between यूज करते हैं. I'm standing between the trees. मैं दो पेड़ों के बीच में खड़ा हूँ.
I kept the phone between two books. मैंने अपना I kept the phone between two books. एक बुक यहाँ है, एक यहाँ है, और ये फोन बीच में है. समझ आया? between easy है. I'm sure between कहाँ यूज होता है? जब we are talking about only two aspects. I am standing between the trees. कि मेरे लेफ्ट में भी ट्री है, राइट में भी ट्री है, और मैं बीच में खड़ा हूँ. That's it. I kept the phone between two books. दो बुक्स हैं, उसके बीच में फोन रखा हुआ है. Between, so simple. Moving ahead, among. I was among 50 people. So herein it is more than two. दो से ज्यादा की बात कर रहा है, लेकिन काउंटेबल की बात कर रहा है. For example, I was among 50 trees. I was standing among the trees. मैं पेड़ों के बीच में खड़ा था, लेकिन वो काउंटेबल थे. 10 पेड़ हो सकते हैं, 20 पेड़ हो सकते हैं, मे बी 30 पेड़ हो सकते हैं. I was among 50 people. मैं 50 लोगों के बीच में था. मैं किसी ऑडिटोरियम में गया. I can say that I was among 50 people. जहां पर आप काउंट कर सकते हो, you know that these many, right? वहां यूज करोगे among. More than two, but countable. Cool. Moving to the amongst. Amongst, I was amongst the crowd. Herein, it is of course more than two, but the number is not countable. यहाँ काउंट नहीं कर रहे हो. आप एक रोड पे जा रहे हो, आपने बोला बहुत सारा ट्रैफिक है, आप वहां स्टक हो गए हो बीच में. You are amongst the crowd, but you don't know how many people. Maybe 1,000 है, maybe 5,000 है, lakhs है, because it is not countable. जब countable नहीं होता, वहां amongst use करते हैं. Clear? Let me reiterate. Between, when we talk about only two aspects, I am standing between the two trees. I'm standing between the trees. मतलब पेड़ के बीच में खड़ा हूँ. एक पेड़ इधर है, एक पेड़ इधर है. Among होता है I was among 50 people. मैं 50 लोगों के बीच में था. I know there are 50 people in total. 50 से ज्यादा नहीं है. Countable है. Among. Amongst countable नहीं है. It could be numerous. I don't know. I was amongst the crowd. Clear? I hope it would have certainly helped you in easiest way I wanted to bring in, or is the easiest method. I did not find it, so I thought this is a way I could help you out. So we have done between, among, and among. Still there are any doubts or any clarification? As I always say, just a comment away. Just comment me, I will help you. इससे भी और अच्छे तरीका होगा, I will help you. So we have done in total 6 prepositions. 3 हमने पहले की थी, 3 आज हमने करी है. In our upcoming classes, maybe next week, I'll bring 3 more prepositions. Come on. Okay, let's move. Okay, no one wear the shoes, no market, no shoes in the market. ये I brought it purposely. Let me tell you, it is not. It is basically related to marketing funda. Oh, let me tell you a story. एक story सुनाता हूँ मैं आपको. What was happened? It is. I'm talking about earlier days. बहुत पहले की बात है. बहुत पुरानी टाइम की बात है. जापान की बात है. And it's a real story of Japan. There was a company. एक company हुआ करती थी, shoes company, इंडिया में. Very reputed company. I will not take the name of that brand over here. You may search it. और ये real story है. कोई बहुत reputed brand company, बहुत पुरानी company है. I'm sure some of you might have got the idea. अगर किसी ने पहले भी ये story पढ़ी. तो उस company में क्या हुआ? On that time, globalization was increasing. Globalization means when your economy, India से हम बाहर के देशों में जाके अपना business कर सकते हैं. We can do import and export. Export means when we sell our products outside. Import means when we take our products in our economy. So export is better जब हम चीजें बाहर भेजें. तो नया नया ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ था. हर कोई कंपनी चाह रही थी कि हम बाहर जाके भी अपना प्रोडक्ट बेचें. आजकल तो इट्स मल्टीनेशनल टाइम है. हर एक प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस होता है. इट्स नॉट ओनली टू पर्टिकुलर टेरिटरी और पर्टिकुलर नेशन, राइट? बिकॉज वी आर क्वाइट, हर एक कंपनी बाहर की यहाँ है और हमारी इंडियन कंपनीज भी बाहर है. तो तब ऐसा नहीं होता था. इट यूज्ड टू हैपन वन, बहुत रेयर, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता था कंपनी के पास, जिसकी वैल्यूएशन अच्छी होती थी, वही सोचती थी कि हम अपना बिजनेस बाहर करें. सो इस शू इंडस्ट्री ने क्या किया? दे थॉट दैट हम अपना बिजनेस जापान में स्टार्ट करते हैं, बिकॉज इन इंडिया दे वर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. सो दे थॉट लेट्स एक्सपैंड. तो एक्सपेंशन का आइडिया तभी आता है until जब तक आप अपने ही देश में, आपके पैर स्टेबल नहीं है, आप एक्सपेंशन का थोड़ी सोचोगे. जब आप स्टेबल हो गए उसके बाद आप सोचते हो चलो अब यहाँ स्टेबल हो गए, लेट्स मूव नाउ. हर कोई एक अपना बेंचमार्क लेके चलता है. मैंने ये अचीव कर लिया, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर मी? एवरीवन थिंक्स टू एक्सपैंड.
अगर if I want that I should be promoted in my job at to this level, once I got it, so I will think ना कि अब इसके आगे मुझे अचीव करना है, वहां तो नहीं बैठा रहूंगा. So ऐसे ही कंपनी ने बहुत अच्छा बिजनेस कर रही थी इंडिया में, they were earning good revenue, good profit. Then they thought of now let us expand. So expansion के लिए उन्होंने जो कंट्री चूज की, जापान चूज की, कि हम अपना स्टॉक जापान में बेचते हैं. सो फर्स्ट लेट्स डू वन थिंग, लेट अस इवैल्यूएट द मार्केट कि जापान का मार्केट कैसा है. जापान का मार्केट, ऑफ कोर्स किसी नई कंट्री में जाके बिजनेस जमाने के लिए वहाँ का मार्केट करना पड़ेगा, सर्वे करने पड़ेंगे, लोगों की क्या प्रेफरेंस है, किस टाइप की उनकी नीड्स हैं, क्या डिमांड है, उनका सैलरी स्ट्रक्चर सर्वे होता है. ऐसे ही कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आता. देयर आर लॉट ऑफ बैकग्राउंड वर्क. एडवर्टीजमेंट इज द लास्ट स्टेज, लेकिन उससे पहले बहुत बैकग्राउंड वर्क होता है. लोगों की नीड्स क्या है, उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, अगर हम नया प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं क्या वो पसंद करेंगे नहीं करेंगे. सो मेनी एस्पेक्ट्स होती हैं. ऐसे ही नहीं कंपनी ने लॉन्च किया, दे नो कि व्हाट इज हैपनिंग, लोगों का क्या एक टेस्ट सेट पैटर्न है, उसी हिसाब से वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस है. तो उन्होंने अपने एक मार्केटिंग मैनेजर को बुलाया, हेड ऑफ मार्केटिंग. दे टोल्ड देम कि यू आर गोइंग फॉर जापान फॉर 1 month, गो देयर, find out we are going to establish our shoe industry in Japan. वहां जाके पता करो कि यार जापान में लोग किस टाइप के जूते पहनते हैं, क्या होता है. उसके बाद जब तुम लेके आओगे, सर्वे वगैरह करके आओगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आओगे, what we gonna do, we will set up our business in Japan. वो कहता है ठीक है. वो 1 महीने के लिए जापान जाता है, हर गली गली घूमता है, मार्केट जाता है, लोगों से बात करता है. he finds no one wear the shoes. वहां कोई जूते पहनता ही नहीं था उस टाइम पे. People used to wear slippers और भी बहुत चीजें जो उनको कंफर्ट लगता था, जिसमें जूते आज तक किसी ने नहीं पहने थे. उनको पता ही नहीं था कि जूते होते क्या. 1 महीने बाद जब वो बोर हो गए कि यार कहाँ फंस गया मैं, यहाँ तो किसी को पता ही नहीं है जूते होते क्या है. नो वन इज, देयर इज नॉट ए सिंगल पेयर ऑफ शू ही फाउंड इन द मार्केट, नॉट ए सिंगल कंपनी. ना कोई कंपनी जूते बना रही थी, ना किसी को पता था. इट वाज जस्ट लाइक वेस्ट. ही स्पेंट इंटायर, उसको 1 महीने बाद आना था, पर वो 15 दिन बाद ही वापस आ गया. जब मीटिंग हुई कंपनी के साथ, उसको बुलाया गया और पूछा गया कि आप 1 महीने के टूर पे थे, बट यू केम बैक आफ्टर 15 days, व्हाट हैपेंड. वो उसने प्रेजेंटेशन चलाई, सबको बताया, सब सोचते रहे कि हाँ यार बेकार में भेजा, आपने खर्चा भी किया. तो कंपनी ड्रॉप द प्लान. उसने एक स्टेटमेंट लिखी अपनी प्रेजेंटेशन में लास्ट में, नो वन वेयर द शूज इज इक्वल टू नो मार्केट. वहां पर कोई शूज है ही नहीं, ना कोई पहनता है, तो वहां कोई मार्केट हो ही नहीं सकती. क्लोज बना दिया आगे. प्रेजेंटेशन खत्म हो गई, कंपनी ने बोला लेट्स क्लोज इट. वो प्लान उनका क्लोज हो गया. 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए. उस कंपनी का जो मार्केट मैनेजर था, उसने उस कंपनी से स्विच करके दूसरी कंपनी में चला गया. अब कंपनी ने नया मैनेजर हायर किया, मार्केटिंग मैनेजर, सेम पोस्ट. जब नया मार्केटिंग मैनेजर आया तो वो स्लाइड पढ़ रहा था. जब उसने ये स्लाइड पढ़ी तो उसने बोला नो वन वेयर द शूज नो मार्केट. उसने पूछा क्या है ये, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मार्केटिंग मैनेजर गए थे वहाँ और उनको उनकी प्रेजेंटेशन है. तो उन्होंने बोला आई वुड लाइक टू गो टू जापान. तो कंपनी ने बोला तुम पागल हो, जापान में तुम क्या करोगे जाके, वहां तो कोई जूते पहनता ही नहीं. कह रहा आई स्टिल वांट टू गो देयर. तो उसको कंपनी ने 1 हफ्ते के लिए पूछा. तो पूरा 1 हफ्ते वहां उसने सर्वे किया, सब किया और देखा. और वापस जब वो आता है, वो भी अपनी प्रेजेंटेशन चलाता है. वो लिखता है नो शूज इन द मार्केट इज इक्वल टू एक्सीलेंट मार्केट. यू गॉट द डिफरेंस. नाउ ही टेल्स कि बॉस वहां कोई जूता है ही नहीं अभी तक, कोई कंपनी पहुंची ही नहीं है अभी तक. Why don't we grab that market? Why don't we expand there? It's an excellent market. It's an excellent market. Excellent market ही तो है, अभी तक कोई जूते का कॉम्पिटिटर ही नहीं है वहां पर. If I talk about different foreign nationals, जहाँ पर n number of shoes companies are there, they're competing with each other. किसी का प्राइस ये है, किसी का ये, हर कोई सस्ते में बेचने की कोशिश कर रहा है. A lot of cutthroat competition. लोग आजकल क्या है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है. कोई एक प्रोडक्ट इतने का आता है, दूसरी कंपनी उसको उससे कम का निकाल देती है. इट हैपनिंग. सो कोई कंपटीशन ही नहीं है, अभी तक कोई जूते लेके नहीं आया. तो इट्स गोना बी एन एक्सीलेंट मार्केट. ओनली एंड ओनली वी विल लीड दैट नेशन. हमारी मोनोपोली रहेगी, जिस प्राइस पे हम कहेंगे उस पे लोग बेचेंगे. सो दैट इज अ थॉट प्रोसेस. आई वांटेड टू पर्पसली bring it this in our presentation. That's a thought process. ये हमारा थॉट प्रोसेस होता है. पहले वाले ने बोल दिया कि वहाँ जूते पहनते ही नहीं सर, नो मार्केट. दूसरे वाला जब गया उसने बोला सर कोई भी जूता मार्केट में अभी आया ही नहीं है. इट इज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी, एक्सीलेंट मार्केट फॉर अस. हमारे लिए इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है वो, हम वहां जाएंगे, लीड करेंगे, किसी और कॉम्पिटिटर को आने ही नहीं देंगे. आई होप यू गॉट द क्रक्स व्हाट आई वांट टू से. सो दैट शुड बी अ थॉट प्रोसेस. यू कैन रिलेट इट टू नाउ. ओके,
So I have written some more things. Marketing strategy, कुछ और 2-3 चीजें बताऊंगा. अगर आप लोग किसी मॉल में गए हो, आई एम श्योर एवरीवन would have visited a mall or a departmental store जहाँ पर हमें सब कुछ मिलता है. Usually we prefer to go जहाँ पर हमें कार्ट मिलती है, हम अपना ग्रोसरी का सामान ले जाते हैं, सब कुछ उसमें डाल के we come to the billing counter. एक चीज नोट करना, कल संडे आई एम श्योर सम माइट हैव प्लान फॉर गोइंग टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर. देयर इज नो क्लॉक एट ऑल. उस डिपार्टमेंटल स्टोर में कभी भी क्लॉक नहीं होती है. यू नो व्हाई? बिकॉज व्हेन यू आर, दे वांट यू जस्ट स्टेप इन द, एक बार अंदर आ जाओ उसके बाद. और आपने कभी सोचा होगा 5 मिनट के लिए जाते हो और निकलते हो 1 घंटे बाद. इट्स अ फैक्ट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर इज नो क्लॉक. आपका ध्यान जाएगा ही नहीं वॉच की तरफ. आओ, आप इतना उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे, प्रोडक्ट देख के खुश अच्छा लगेगा, आपका ध्यान, आप टाइम तो जैसे पता ही नहीं चला. आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है 1 घंटे बाद, आई एम कैन वाउच ऑन इट, आप भूल जाओगे. आप एक बार घुस जाओ बस डिपार्टमेंटल स्टोर में कुछ लेने, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो गया और बाहर आया हो. वो पूरा घूम के मार्केट प्रोडक्ट देख के अच्छे से वो बाहर निकलता होगा. सो यू, दैट इज व्हाई द पर्पस दे डू नॉट हैव ए क्लॉक. किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में क्लॉक नहीं है. दैट्स फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, जब आप एंटर करते हो, उनके जो स्टार्टिंग के शेल्स होते हैं उसमें नीचे वो चॉकलेट्स या बच्चों का सामान नीचे रख के रखते हैं. यू नो व्हाई? इफ यू किड्स आर विद यू, किड्स, उनकी नजरें पड़े और वो खुद ही उठा ले. क्योंकि अगर ऊंचे चॉकलेट्स वगैरह ऊपर रखी होंगी, बच्चों का ध्यान ही नहीं जाएगा, ना वो उठा पाएंगे. सो इट्स अ मार्केटिंग फंडा दैट दे इंटेंशनली कीप दोस किड्स प्रोडक्ट नीचे शेल में, ताकि बच्चों का ध्यान जाए, वो पेरेंट्स को बोले कि मॉम डैड आई नीड दैट. दैट इज द सेकंड थिंग. थर्ड थिंग इज दैट आप जिस चीज के लिए जाते हो वो कभी भी आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलेगी. मैं लेने गया हूँ ग्रोसरी, राइट, और जो ग्रोसरी का उनका सेक्शन होता है, राइस, फ्लोर, जो भी है, वो सबसे लास्ट में होगा, कभी भी स्टार्टिंग में नहीं होगा. बिकॉज दे वांट दैट जब तक आप उस सेक्शन में पहुंचोगे उससे पहले आप कितनी चीजें शॉप कर चुके होगे. आप उससे पहले आपको मैगी, बिस्किट, चॉकलेट्स, सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, स्पेशली द न्यू प्रोडक्ट्स, वो बिल्कुल उनके स्टार्टिंग काउंटर में होते हैं. डील ऑफ द डे, फ्लैश सेल, ताकि आप ये सब उठा लो. आप लेने आटा चीनी आए हो, लेकिन जब तक वहां पहुंचोगे उससे पहले आप इतना सारा सामान अपनी कार्ट में डाल दोगे. इट्स ए मार्केटिंग फंडा. बिकॉज यू नो व्हाई? बिकॉज व्हेन आई, अगर आप किसी शॉप पे जाते हो, हमारे आसपास शॉप्स होती हैं, आप उनको कहते हो भैया एक बिस्किट देना, यू गिव इट मनी एंड ही गिव इट टू यू, यू कम बैक. डू यू एवर थिंक आपको भले ही एक चीज एक्स्ट्रा लेनी हो बट आप नहीं लेते हो, छोड़ यार आप तब नहीं, मैं बिस्किट ही लेके आ जाता हूँ, क्योंकि वो आपको दे रहा है. वहां पर क्या होता है, इफ दिस इज आवर ह्यूमन बीइंग, साइकोलॉजिकली आई एम टेलिंग यू, a sense of possessiveness. Human being, we are very possessive. When we feel the product, अगर कोई प्रोडक्ट लगा हुआ है वहां पर, तो यू कैन सर्टेनली टच इट. हम अपने नॉर्मल जो नेबर के पास आसपास शॉप होती है, वहां हम कोई प्रोडक्ट देखेंगे भी, वो कहेगा, टोक देगा, रखो इसको, नहीं देखना नहीं, आपको क्या चाहिए मैं देता हूँ, होता है ना. दे डोंट इवन अलाउ टू टच अस. दैट्स व्हाई वी आर वेरी, हमारी जो शॉपिंग होती है लिमिटेड होती है. वहां पर ज्यादा इसलिए होती है, फ्री रखा हुआ उन्होंने, आप कुछ भी टच करो, दे वोंट टेल यू कि आप इसको टच क्यों करें. इनफैक्ट दे वांट दैट आप उस प्रोडक्ट को देखो, क्योंकि जब तक आप उस प्रोडक्ट को अपने हाथ में नहीं उठाओगे, फील नहीं करोगे, पॉजिटिवनेस नहीं होगा. We are very possessiveness. Once we have that product, a feeling of possessiveness will generate in us कि yes, this is mine, ये mine, मेरी है, तो आप उसको खरीदोगे. It's a psychological effect. If you feel that product, you will certainly buy it. That's it. Secondly, and last but not the least, आप जाते कुछ और लेने के लिए हो, लेकिन कुछ लेके और आ जाते हो. मैं गया तो कुछ एक प्रोडक्ट के लिए गया था कि मुझे यही लेना है, लेकिन जब मैं बाहर निकला वो तो मैंने खरीदा नहीं और अननेसेसरी चीजें ले आया. इट हैपेंस विद एवरीवन. भले ही वो प्रोडक्ट भी साथ लेके आऊं, लेकिन 10 चीजें और लेके आऊंगा, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो, सेल चल रही है. चिप्स, भले ही मुझे चिप्स नहीं चाहिए, बट मैंने देखा है बाय टू गेट वन है, सेल चल रही है जी, आई विल बाय इट. दे अट्रैक्ट अस इवन दो देयर इज नो नीड. ऐसी ऐसी चीजों पे सेल होती है जिसकी नीड नहीं है, बट बिकॉज ऑफ आवर माइंड की सेल चल रही है, वी गेट इट. सो दैट्स अ मार्केटिंग फंडा. Right? I hope it is helping you to understand that also. That is why I meant to take it. Okay, so now the last thing of the today's class, 5 types of listening. Now I'm going to tell you what are the 5 types of listening. हम सुनते हैं, सबको सुनते हैं. Maybe we are in auditorium, हम न्यूज भी देखते हैं, हम किसी पॉलिटिशियन का सेशन भी सुनते हैं,
हम यूट्यूबर, मे बी मोटिवेशनल स्पीकर, और मे बी पेरेंट्स हमें कुछ बोलते हैं वो भी सुनते हैं, हम टीचर का भी, क्लास में टीचर को भी सुनते हैं, बॉस को भी सुनते हैं, मतलब listening is important. Now I'll tell you what are the 5 types of listening. First is formality listening. फॉर्मेलिटी के लिए आप सुन रहे हो, पेरेंट्स आपको डांट रहे हैं कि ये पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, सुन लेते हो, कोई नहीं यार, बोल रहे हैं बोलने दो। रात को देर से घर आता है, सोया रहता है, कुछ नहीं करता, इट्स कॉल्ड फॉर्मेलिटी लिसनिंग। यू आर जस्ट लिसनिंग, यू डोंट, आप अपने मोबाइल पे ऐसे लगे हो, वहां पापा और मम्मी आपको डांट रहे हैं कि पूरा दिन, दैट्स अ फॉर्मेलिटी, यू डोंट इवन, आप उनको भी नहीं बता रहे हो कि आप सुन रहे हो, फॉर्मेलिटी के लिए, दैट्स कॉल्ड फॉर्मेलिटी लिसनिंग। सेकंड लिसनिंग होती है प्रिटेंडेड, आप ऐसे बैठे हो ध्यान से, आपका माइंड कहीं और है, वो आपसे पूछते, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर इन ए क्लास, टीचर इज राइटिंग समथिंग फ्रॉम ए चॉक ऑन द बोर्ड एंड टीचर इज सेइंग इजंट इट राइट, यू सेइंग यस, यस यस यस, यू आर प्रिटेंडिंग दैट यू आर लिसनिंग, आप प्रिटेंड करा रहे हो कि आप सुन रहे हो, बट इन एक्चुअल यू आर नॉट लिसनिंग, आपका ध्यान कहीं और है, यार मुझे ये भी लेना है, मुझे अच्छा ये भी है, ये भी है, वहां पर आप सेशन चल रहा है, एंड देन दे वंस दे आस्क ए क्वेश्चन, आप कहते हो हाँ, एंड यू नो उनको विश्वास दिलाते हो, यस यस यस, मे बी ड्यूरिंग कोविड वी हैड अ लॉट ऑफ ऑनलाइन सेशंस, क्लासेस हुई हैं, मीटिंग्स हुई हैं, बहुत प्रिटेंडेड लिसनिंग हुई है, हम प्रिटेंड करते हैं यस आई एम लिसनिंग, ऐसे ऐसे हम नोट भी करते हैं, बट हमें समझ कुछ नहीं आ रहा होता, दैट्स अ प्रिटेंडेड। नेक्स्ट आता है सिलेक्टिव लिसनिंग। सिलेक्टिव लिसनिंग का मतलब ये होता है कि जो जो अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं वो आप सुन रहे हो, जैसे मान लो अगर हम कोई पॉलिटिशियन का स्पीच सुन रहे हैं, जब वो कोई सेंस ऑफ ह्यूमर वाली बात हो रही है या कुछ है, वो हम सुन के हंस देते हैं, उसके अलावा कोई सीरियस थॉट पे बात हो रही है, वी डोंट लिसन टू इट। सेलेक्टिव मींस व्हाटएवर आई वांट टू लिसन आई एम लिसनिंग इट। इफ समथिंग, फॉर एग्जांपल इन ए मीटिंग, ऑफिस में मीटिंग हो रही है, बॉस मेरे बारे में बात कर रहा है, Shant is doing a good performance. I think we should promote him. I am very selective. मैं सुन रहा हूँ, उस चीज मेरे बारे में बात हो रही है, मेरी तारीफ हो रही है, बस appreciation किसको नहीं सुनना पसंद, I will listen to it. But when he is moving to the next person, okay, now talk about his performance. इसने क्या किया, इसने इतना किया, तब नहीं सुनूंगा मैं. That's called selective listening. I am listening what I want to listen. फोर्थ इज रिएक्टिव लिसनिंग। रिएक्टिव लिसनिंग होती है जब आप सुन के आप बीच में कभी कभी बीच में जवाब दे देते हो, रिएक्ट करते हो, मतलब आप आंसर देते हो, आप बताते हो, प्रिटेंड कराते हो कि आप सुन रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर कुछ क्लास में करा रहा है, आपने एक दो वर्ड सुन ली, किसी लास्ट में बताया था आपको यस टीचर, सो इसका मतलब ये होता है, इसका दैट इज रिएक्टिव लिसनिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्टिव पैशनेट लिसनिंग। एक्टिव पैशनेट लिसनिंग होती है जैसे मैं अब YouTube पे सेशन कर रहा हूँ, आप मेरी बातें सुन रहे हो, आई एम श्योर यू आर लिसनिंग एक्टिवली एंड पैशनेटली। एक्टिवली पैशनेटली लिसनिंग मीन्स पूरे कंसंट्रेट से सुनना, यू आर नॉट फॉर्मेलिटिंग इट, यू आर नॉट प्रिटेंडिंग इट, यू आर नॉट लिसनिंग ऑन सिलेक्टिव थिंग्स, यू आर नॉट रिएक्टिंग इट। एक्टिव पैशनेट लिसनिंग, सुनना बड़े ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंटली, carefully, the way you're listening to me. I'm sure you're listening to me in the fifth way. So that is called active passionate listening, APL, right? So we have to be active passionate listening. All right, so that was about the listening part. So yes, that was all for today. I hope it was an enriching and learning session for you, because in every class we want that we should bring something new with should not be a boring one, kuch naye cheezon ke sath. That is why I keep telling you different stories, different fundas of life, so that you get engaged, because communication ke alawa bhi aur bahut cheezein life mein, right? So we try to bring every spice कि आपका जो overall grooming है वो all aspects से होनी चाहिए, not only one aspect. That is why it is a communication section, not a conversation or a basic English session. इसमें हर चीज का मसाला मिलेगा आपको. So yes, keep watching, keep listening. We will have something new in our tomorrow's session, and as soon as we progress further, we'll bring different varieties of stuff, and that will be useful and enriching. We're going to certainly groom your knowledge. So here I take a bid now. Thank you so much for listening, active, passionate listening, and take care. Enjoy your weekend. Enjoy your Sunday. Bye.